Welcome to this video on bamboo-based broom making. Broom with bamboo handle has recently gathered the limelight in the social media and market. It's a wonderful product made from bamboo, replacing the plastic. Before we get to know more about this product, let us know some facts about the wonder grass called bamboo. Bamboo is the fastest growing plant on this planet. Bamboo releases 35% more oxygen than trees. Globally, there are more than 1,400 species of bamboo. Global market of bamboo-based products is estimated to be more than $35 billion. Bamboo supports livelihood of 2.5 billion people. There are more than 1,500 documented uses of bamboo. Bamboo can be harvested in 3 to 5 years, making it a viable substitute of wood. Bamboo is light in weight but stronger material. Its tensile strength exceeds that of mild steel. No wonder why bamboo is called wonder grass. Bamboo-based broom product is a unique eco-friendly product made from bamboo. It has great potential to reduce plastic pollution. In India alone, almost 40,000 metric tons of plastic is used for making the broom handles. Inevitably, all of them end up in landfills. The bamboo-based broom will reduce the use of such plastic to a great extent. This is a sustainable solution not only for reducing the plastic pollution but also to generate livelihood for a large number of people, especially the forest dwellers. Encouraged by the clarion call of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to make India single-use plastic-free, Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited or TRPC, a Government of Tripura undertaking, has taken the initiative for cluster-level product development, bulk production and marketing of bamboo-based broom products for the first time in India. Contribution of BCDA Agartala and FRCLE Agartala are also noteworthy. Let us explore more about this bamboo-based broom product and their production technique. Bamboo-based broom is a product made by hand using small tools by artisans. The key feature of this product is that the handle of the broom is made from bamboo pole, making it eco-friendly, long-lasting and handy. Let us know the key raw materials needed to make bamboo-based broom product. Bamboo pole to make the handle, broomstick, jute or suitable natural fiber thread, adhesive or glue, lime, salt, turmeric, neem or chemicals like boric, borax, etc. for treatment of bamboo, wax, varnish, melamine or any suitable coating, consumables like sandpaper, grinder wheel, packaging material, etc. Now let us know the tools, implements and arrangement needed for production of bamboo-based broom product. Cutting tool like hand saw and cut-off saw, hand drill, angle grinder, sanding machine, customized set of chisel as per the need, turning lathe and mortizer, but these are optional, diffusion treatment vessel with heating arrangement, polishing and buffing tool, spray machine with pressure or vacuum tank for lacquering and varnishing, jigs, fixtures, measuring tools, etc., personal protective equipment, first aid, fire extinguisher, etc. Product handling, packaging and storage area based on the production capacity. An artisan or producer of this product is called bamboo-based broom maker. A bamboo-based broom maker is the one who processes the bamboo pole to make a suitable enclosure or capsule or casing and inserts a specific volume of broomstick in it and completes with a snug fitting finish using a series of techniques and small tools, maintaining the product quality, safety and durability. Let us now understand the manufacturing process of bamboo-based broom product. There are broadly 3 steps of production.
Primary processing, where the raw materials are cut, treated, and prepared as per the desired dimension and specification. Secondary processing, where the primary parts are assembled, fixed, and fitted. Tertiary processing, where the assembled product is finely polished, coated with waterproof layer, dried, and packaged. Let us see these steps in detail. Bamboo culm of suitable diameter, thickness, and internodal length shall be selected for broom handle making. Species like Bambusa tulda, Dendrocalamus longispathes, Dendrocalamus hamiltoni, etc. are preferred for making the broom handle. Select a bamboo pole of outer diameter in the range of 4 to 6 cm. The bamboo pole shall be analyzed logically so as to get the maximum usable cut pieces of desired length for making of bamboo handle. The bamboo poles are cut using a cutting tool like cut-off saw. The rotary cutter ideally shall have TCT blade with at least 90 teeth. Bamboo cylinders are then subjected to removal of green outer surface using a pilling tool. The pilling tool must be sharp and it should be handled at appropriate angle and force to reduce wastage and avoid damage to the bamboo cylinders while removing the green surface. The cut bamboo cylinders are then treated in treatment bath using natural ingredients like neem, turmeric, edible salt, soda, etc. or chemicals like boric and borax. Generally, a 2 to 3% volume by volume ratio with water is maintained for batch treatment. Fresh treatment bath is prepared every time for a new batch. The vessel containing water and ingredients are heated to a temperature above 80 degrees centigrade and the freshly cut bamboo cylinders are immersed completely in the solution. This process of treatment is called diffusion. This treatment is done to reduce fungal or borer attack on bamboo. After treating the bamboo in the hot solution for about 2 hours, the solution is left to cool down. The treated bamboo cylinders are then taken out and kept for drying. After desired drying of moisture content not more than 10%, the treated bamboo cylinders are kept in dry place for further processing. Selecting and sorting of broomstick material according to the length, weight and quality of the broom to be made as per the direction of the supervisor. Examine and remove sticks, grass, stems which are short, broken or do not otherwise meet standards. Identify and select suitable natural fiber thread like jute, etc. of appropriate strength, ply, flexibility, etc. Measure and mark the length equal to approximately 10% of the total length of the bamboo cylinder from both ends of the bamboo cylinder. Measure and take appropriate length of thread, jute or suitable natural fiber thread, so as to cover the marked length on the bamboo through close coiling. Soak the thread in water resistant adhesive
and spill off extra adhesive from the thread. Carefully carry out coiling of thread along the marked length from a particular end of bamboo cylinder with snug fitting and no gap. Appropriately tie and fix the coil thread. Dry the coil thread portion of bamboo cylinders, avoiding direct sunlight and dust. Analyze and take the required quantity of broomstick material based on effective inner volume of the particular bamboo cylinder. Take safety precautions while cutting. Dispose the wastage carefully. Next is insertion of broomstick in bamboo cylinder. Appropriately hold broomstick bundle and bamboo cylinder. Carefully insert the broomstick inside the hollow bamboo cylinder up to the other end. Take appropriate care so as to avoid breakage of stem or flower while handling and carrying out the insertion into the bamboo cylinder. Next step is coiling of thread on exposed broomstick. Measure and take appropriate length of thread so as to cover the marked length on the exposed part of inserted broomstick bundle through close coiling. Soak the thread in water resistant adhesive and spill off extra adhesive from the thread. Carefully carry out coiling of thread along the marked length on the exposed part of the inserted broomstick bundle with snug fitting and no gap. Appropriately tie and fix the coiled thread around the broomstick bundle. Use appropriate tightening bit if required. Inspect and ensure that the assembled unit conforms to the given quality and specification. Dry the coiled thread portions, avoiding direct sunlight and dust. The assembled product is then subject to sanding and polishing using power tools and manually to smoothen the outer surface of bamboo handle. Sandpaper shall be used in correct sequence from coarser grit to gradually finer grit until the desired level of surface polishness or surface smoothness is achieved. Any unwanted extra edges are removed neatly using tool like chisel to match the dimension as per given design and a fine finished look. Filler or glue are applied to fix the joints, unwanted grooves wherever required, especially in the joints. The lacquer or waterproof coating solution is prepared as per the manufacturer's direction. Appropriate quantity of thinner is added to maintain the viscosity at optimum level. The solution is applied on the bamboo handle outer surface uniformly and carefully without touching the broomstick material. The assembled material is handled properly while doing burnishing. The product is then dried uniformly and completely in a dust-free area. Coat of paraffin wax is applied on the bamboo handle to give it enhanced look. The quality of the final product is checked thoroughly based on the desired specification.
The last step is packing the finished product. The bamboo-based broom products of similar grade are then taken together in quantities of 12 or 24 and bundled and tied together for dispatch to market. The producers should conform to basic safety norms while working with the sharp tools, electrical parts, dust, etc. They should use personal protective equipment wherever necessary. Social distancing norms should be followed as per the government guideline. Group of artisans working in a production center should follow the supervisor's instruction. They should work in a team having coordination among each other in the production line. An artisan should maintain the work area clean after a particular operation. Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited is supporting the group of artisans across different parts of Tripura in production of bamboo-based broom products and marketing of the same. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has called the countrymen to avoid and reduce use of single-use plastic. इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। Honorable Chief Minister of Tripura, Shri Biplab Kumar Dev, took an extra effort in promoting the bamboo and bamboo products across different platforms. त्रिपुरा के जो प्राकृतिक संपदा है, बैम्बू को काम पे लगा के जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो बैम्बू बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, इसकी जो सामान व इसमें जो पैसा 1 लाख करोड़ रुपया बाहर चली जाती है, उसको रोकना है। और वो रोकने का काम नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन हमारी यहाँ होती है। तो इसलिए हम जो पारदर्शिता के साथ मार्केट को से लेके अंतिम व्यक्ति जो इसको बनाने वाला है, उनको जोड़ देंगे। TRPC is working as a facilitating agency to support the artisans in capacity building, raw material linkage and other technical support for production of bamboo-based broom. Not only this, TRPC has already established linkages with large number of buyers across India and in turn providing buyback support to the small producers. The demand for bamboo-based broom products are growing and TRPC is exploring more market channels for reaching out to a large base of consumers. This is a sustainable model of development adopted by TRPC in promoting a plastic-free India through bamboo-based broom products and its producers. Let us learn more about this initiative from the Managing Director of TRPC. नमस्कार, मैं हूँ प्रसाद राव, मैनेजिंग डायरेक्टर TRPC। बेसिकली मैं 2010 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर हूँ, त्रिपुरा कैडर से। लोगों को एडिशनल इनकम जनरेशन ये करने के लिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए 3 यूनिक चीज़ों में इनोवेटिवली यूनिक चीज़ बना के बिजनेस स्टार्ट किया है। इको फ्रेंडली ब्रूम विथ बैम्बू हैंडल, दूसरा है बैम्बू बॉटल्स, तीसरा है बैम्बू यूटेंसिल्स एंड बैम्बू कटलरी। दिखाना चाहता हूँ कि ये ब्रूम ग्रास है। जब हम लोग ये वैल्यूएशन के बारे में सोचा था, सिर्फ वैल्यूएशन नहीं है, वो वैल्यूएशन भी एक नोबल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ का लोकल रिसोर्स जो है, वो लोकल रिसोर्स को यूज करके हम लोग ये बनाना चाहिए करके थोड़ा इनोवेटिव सोचा है। तो अभी तक हम लोग देख रहे होंगे कि जितना भी पहले ब्रूम स्टिक बनता था, प्लास्टिक हो के यूज करके होता था। ये प्लास्टिक पूरा बाहर में बन के आता था, हम लोग बाहर से खरीद के यहाँ पे झाड़ू बना के फिर बाहर में एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि
बाहर का रिसोर्स यहाँ पे आके फिर यहाँ पे वैल्यू हमारा रिसोर्स के साथ जोड़ के यहाँ पे वैल्यू एड होके बाहर चला जाता था। इसमें कॉस्टिंग भी डबल हो जाता था और दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करता था वो इको फ्रेंडली नहीं था, एक पोल्यूशन जनरेट करने का सोर्स था। हम लोग एक कैलकुलेशन भी करके देखा है, एवरी ईयर इंडिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के थ्रू लगभग 40,000 मीट्रिक टन का प्लास्टिक ये प्रोडक्ट के थ्रू एवरी ईयर हमको सॉइल फिलिंग में जा रहा है। उसको मेनली हटाने का चक्कर में के लिए हम लोग ये डिवाइस किया है। ये पूरा बैम्बू है, इट इज़ ए वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो, नहीं तो दुनिया में भी हो, इस तरह का किया है। ये इसलिए किया है कि इसका जो प्लास्टिक को जो अल्टरनेटिव यूज़ करने का जो तरीके का जो बैम्बू है सिर्फ हमारा त्रिपुरा में नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, कोई दूसरा जगह पे है ही नहीं। ये प्रोग्राम के दौरान हम लोग लगभग 1 लाख बैम्बू ब्लूम्स डेवलप किया है। डेवलप करने के बाद टेंडर के थ्रू हम लोग ऑलरेडी बेच चुका है। देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इवन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इवन बांग्लादेश में भी हम लोग लगभग बैम्बू का जो ब्लूम स्टिक है उसमें पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करके 100% प्लास्टिक फ्री करके हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके सो दैट हम लोग इजीली एक्सपोर्ट कर सके। अभी प्राउडली हम लोग ये मेंशन करना चाहता है कि अबाउट 15,000 ब्लूम्स इको फ्रेंडली ब्लूम्स जो है हम लोग बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा है। अभी फ्यूचर में भी ये प्रोडक्ट्स को बड़ा मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा स्ट्रैटेजी हम बना रहा है। हमारा साथ में कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, BCDA करके एक इंस्टीट्यूट है और एक इंस्टीट्यूट है FRCA लेकर के हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का, उन दोनों का सहयोगिता देके एक कंबाइंड कोलैबोरेटिव एफर्ट में हम लोग इसका कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। पैंडेमिक में ऑप्शंस फॉर जनरेटिंग द लाइवलीहुड बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसी टाइम में हम लोग ये वाला एक्टिविटीज़ को टेकअप करके इंटीरियर एरिया में जहाँ पे पूर फॉरेस्ट पूर ट्राइबल पीपल रहता है उन लोगों के अंदर में टेक्नोलॉजी लेके जाकर उनको सिखा के ये एक्टिविटीज उन लोगों से करवा के उनको इनकम जनरेशन एडिशनल इनकम जनरेशन करने के लिए ये एक्टिविटीज हम लोग टेकअप किया है। तो यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स है सभी लोग जनरसली रेस्पॉन्ड किया है, हमको सपोर्ट किया है, मदद किया है। While TRPC Limited continues to expand the production base, we request you to please use bamboo-based broom product and contribute your part in promoting an eco-friendly earth and an economically empowered society. मैं बैम्बू स्टिक में जार बनाती हूँ।